हाँ Oh no. रफ बुक Ma'am, rough book. yes Ma'am, in rough book. write it in the rough book okay 3 times Okay. okay घमंड का परिणाम will start first revision okay आर्ग्यूमेंट का हिंदी शब्द क्या है बहस बोलो बहस आर्ग्यूमेंट बहस बोलो बहस Argument. write 3 times write fast okay And recreate that one. Can you get the chocolate sprinkle? I don't have donut dough, but I can eat. Go get it, hurry. I'm just gonna start heating up oil. बहस That's a lot of dough. We're gonna turn it into We have to write 3 times. 3 times We're going to cut that into बहस donut shape. This will fall apart. Now we add in our 2 शिमला donuts and this is I'm finished. now. To make it delayed, that was the sugar. शिमला We got some cocoa powder and Ma'am, finish. milk, but I write right now. 3 times. Water? Yeah, I've never done this dough and donuts, but this is the first for everything. You're improvising this whole thing. Yeah. Our blade. 1 Should I? This is what I'm I'm finished, ma'am. perfect consistency. ताकतवर Takatwar. Powerful. right Ma'am, disturb. from whose from somebody's audio Taste that one first. Ma'am, put them good. Hospital. oh now it's okay मैं ताकतवर also I wrote 3 times. right ताकतवर Finish writing. ताकतवर write it fast okay yeah. next word straw का हिंदी शब्द क्या है straw Straw boost. क्या है Boost. goose okay write it goose goose साउंड का हिंदी शब्द क्या है साउंड आवाज 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 Finish. आवाज आवाज साउंड बोल बोल कर लिखो ठीक है क्वारल और फाइट का हिंदी शब्द क्या है फाइट और क्वारल का हिंदी शब्द क्या है झगड़ा झगड़ा ओके राइट झगड़ा 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 Fight. Fight. झगड़ा क्वारल और फाइट I'm finished writing. नेक्स्ट वर्ड हीप हीप का हिंदी शब्द क्या है हीप Ma'am, what? हीप 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 का हिंदी Dare. ढेर ढेर I'm finished. Ma'am, can you read the third question? घूस घूस Ma'am, Adidev asked the third question. third one is goose goose Ma'am, yes you want to write one question? I want to write the answer No need. third one is goose take your notebook goose straw straw or
Hay also you can write. Sawdust. Third one, yes. One, two, Ma'am, three. ma'am, straw or sawdust? No, it is sawdust. That it is not suit for this chapter. Okay. Or hay you can. Ma'am, first one. Ma'am, first one. Bahas. Bahas means argument. Bahas, argument. You can write from notes. Okay. Next one, result का हिंदी शब्द क्या है? Result. Result. परिणाम. Children, it is not test. Okay. It is revising. Test will be afternoon. Okay. I will send the link. Now we are Harinam result. revising in the class. Yes. Second one. Oh, second one. Second one, ताकतवर. Means Powerful. ताकतवर, powerful. Ma'am, third one, what is that? Third one, goose. Goose, straw. Thank you, ma'am. Okay. Next one, result का हिंदी शब्द है परिणाम. You will get the English word. You have to write the Hindi word. Okay. Okay. आवाज. आवाज, sound. Ma'am, I write everything which you Okay. Very good. Next one, injury. Injury का हिंदी शब्द क्या है? चोट. Injury chot. Chot. Write it. I'm finished. Okay, next विलोम शब्द. विलोम You शब्द. have to write 3 times. Ma'am, Yes. sixth one. Sixth one. Dher. Dher. Dher मतलब heap. विलोम शब्द. मित्र. मित्र का विलोम शब्द क्या है? Shatru. शत्रु. Yes. मित्र. मित्र. शत्रु. Ma'am, ma'am, Parishan. Not परीक्षा. Parisham means Parikshan means परेशान. क्यों? yes. क्यों? Argument. क्यों परेशान? Ma'am, the answer. Answer. It is not. ऊपर नाचे. Jai Paraj. It is not exam. Okay. It is we are revising in the class. Yes, ma'am. I know that. Okay. I know that. I'm asking the answer. What is Parishan? Result. Parinam. Yes. Result. Ma'am, when is the class test of ma'am in the WhatsApp, ma'am put 10 and 11 the class test. Class test. Yes, 10 and 11. Yes, I sent already. Ma'am, the chot means roll, right? Injury. Chot means injury. Okay. When it is there in the notebook, you can open the notebook and write like. Ma'am, I forgot to take my ma'am. Can I forgot to take my notebook. So can I study this all? Yes. Okay. जय पराजय. ऊपर नीचे. ऊपर नीचे. नीचे. Okay. Question answer. Okay. मुर्ग कहाँ रहते थे? मुर्ग गाँव में रहते थे. Now you have to write the answer only एक गाँव में. After you have to write in detail. Okay. Now in the class you have to write only एक गाँव में. Otherwise we will not get time. Okay.
एक गांव में रहते थे. एक गांव में रहते थे. गांव में, that's enough. गांव में is enough. ऊपर नीचे एक गांव में रहते. एक गांव में. बोलो. मुर्गे एक गांव में रहते. एवरीबडी से इन योर माइंड. मुर्गे एक गांव में रहते. गांव का अर्थ क्या है? गांव का अर्थ क्या है? Farm. विलेज विलेज. गांव विलेज. ओके. सेकंड क्वेश्चन. मुर्गे. Sorry ma'am, in the 11th chapter I was not there in the class when you take the 11th chapter. What to do now? So now ma'am, can I read for the test from these questions? Yes. मुर्गे क्यों झगड़ने लगे? What was the reason? क्यों झगड़ना means fight or quarrel. What was the reason? कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन ज्यादा ताकतवर? बात पर दोनों झगड़ने लगे. Yes. कौन ज्यादा ताकतवर है? इस बात पर दोनों झगड़ने लगे. ओके, करेक्ट. बिल्कुल ठीक है. कौन ज्यादा ताकतवर है, इस बात पर दोनों झगड़ने लगे. कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन? Adidev, if you are coming in my WhatsApp any free time, I will send you the meanings. Okay. Yes ma'am. Okay. Ma'am, no need now because I don't have the book. Not I now. forgot to take the book. Not now. After tomorrow. Okay, tomorrow I will be free. Ma'am, not only tomorrow. I after that only need because I am in my mother's home. My book is in father's home. Okay. कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन? इस बात पर. Children, if you have any chapter, listen. If you have any doubt in any chapter, you can put a message in my WhatsApp. Then I will clear it. Anytime I will voice message, right? Okay. Anybody can send message. I will clear it. Okay. इस बात पर दोनों झगड़ने. कौन ज्यादा ताकतवर है, इस बात पर दोनों झगड़ने लगे. नेक्स्ट वर्ड. विजयी मुर्गे का क्या हालत हुई? विजयी मुर्गे का क्या हालत? खा लिया. उसका खा लिया. एक चील ने विजयी मुर्गे को एक चील ने खा लिया. खा लिया और छीन लिया. विजयी मुर्गे. चील means काइट. विजय मुर्गे को एक चील ने छीन लिया. आदिदेव. Yes ma'am. Big kite. Yes. एक चील ने छीन लिया. एक चील ने छीन लिया. एक चील ने छीन लिया.
क्या हो गया? हम रिविजन It is revision. Yes. Test will be afternoon. Okay, I'll send the link. Okay. Next one. Can I ask you some ekvajan bahuvajan shabd? Yes. Okay. लड़का बहुवचन क्या है? आदिदेव. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you singing in between? क्या? No, ma'am. Yes, ma'am. लड़का हाँ, लड़का बहुवचन लड़का लड़के. लड़के पैसा पैसे Pese. पैसे तोता Tote. तोते. लड़की लड़के Ladikiyam. लड़की Ladikiyam. Ladikiyam. लड़कियाँ. नदी नदियों Nadiyam. not yom. Okay, yam ya and नदियाँ don't write yom, you will not get mark. Yam nadiyam am. Okay. Roti Rotiyam. rotiya. रोटियां Kitab Kitabam. kitabem bem Kitabem. kitabem. At Ab. आदिनाथ बात क्या है? बात बहुवचन क्या है? Meaning? बात बातें. ओके, बात. Batem. बातें पुस्तक पुस्तक पुस्तकें Game. हाँ. चूहिया चूहिए Game. चूहिया. Yam. चिड़िया Chidiye. चिड़िया Video. चिड़ियाम आम. योम will not be Yam. if it is a or am. If it is all striling sub, it will be coming yam. It is Chidiyam. link Chidi. okay. Take next chapter. Chidiyam. Chapter 10. मैम Gandhiji. Yes. मैम Yes. Paddas. anything Paddas. होमवर्क का हिंदी शब्द क्या है? होमवर्क. गृहपाठ. राइट 3 times. जल्दी. homework हाँ. three times only 3 times Only 3 times. okay Holiday का yes. when you will take the test I will send the link afternoon. holiday okay ma'am holiday छुट्टी हाँ छुट्टी. this homework छुट्टी छुट्टी. हॉलिडे छुट्टी. Hubbard means school. Yes. Non-violent school homework होमवर्क का हिंदी शब्द क्या है? गृहपाठ हॉलिडे का हिंदी शब्द Chutti. मैम गृह means house work means पाठ yes. गृहपाठ नॉन वायलेंस का हिंदी शब्द क्या है? नॉन वायलेंस. अहिंसा. Ahimsa. Yes. अहिंसा. अहिंसा अहिंसा. You have to study both Hindi and English word. Or for exam,
it will be only English word is coming. You have to write the Hindi word. Okay. Okay, ma'am. Hindi word you will not get it. Only English word you have to write the Hindi word. Ahimsa, non-violence. British का हिंदी शब्द कौन सा है? British. अंग्रेज. 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 अंग्रेज सरकार. British government. Yes. अंग्रेज सरकार. Ma'am, I teach अंग्रेज सरकार में because I teach Chacha ji. Jawaharlal Nehru's one is there in the textbook that we teach. That's all I am teaching अंग्रेज सरकार. Ma'am, my father teached this word before you teach. Yes. Okay. अगला शब्द है रूल. रूल का हिंदी शब्द क्या है? शासन. 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 ओके. शासन. शासन. Only British or government should be added. British. अहिंसा. British. शासन. फ्री का हिंदी शब्द? शासन. हाँ. आजाद. 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 शासन. मैम शासन meaning What happened to Gilda, ma'am? आजाद. Ma'am, what happened to Gilda, ma'am? Gilda ma'am, she got another class. this much day. You don't like me? Yes, I like. Yes. I like you. I like you. Okay, thank you. Ahimsa, non-violence. Azad, free. Azad. That's Azad. Azad, free. Azad free. Royal court. Royal court का हिंदी शब्द क्या Azad है? free. रॉयल कोर्ट का हिंदी शब्द क्या है? रॉयल कोर्ट क्या है? राजकोट. राजकोट. Rajkot. Head clerk. Head clerk. Head clerk. राजकोट. Royal रॉयल court. कोर्ट. ओके. राजकोट. राजकोट. रॉयल कोर्ट. Now I cannot see what you write. अगला शब्द है हेड क्लर्क. Ma'am, I also cannot see what you're writing. वही I can see, ma'am. वही also cannot see. Because of them. Ma'am, I can see clearly. No problem. something happened. Ma'am, I can see that clearly. Ma'am, That is what not you are good, but writing is it's not- coming late. Ma'am, what you are writing is coming late. That's only the problem. It's coming very late. No, something happened. Now board is not there. 2 minutes taking to come. That is, I can see mostly British. Ma'am, the one, that clerk. Yes. Now board also not there. That is a broad problem. What happened? I don't know. I can tell you That Lakshmi CV is not in our class, right? Lakshmi CV? Parvati Singh. Parvati name is Lakshmi CV. Her sister's name. She didn't change it. Parvati sister's name only that. Yes, ma'am.
लक्ष्मी दीवान। हेड क्लर्क का हिंदी शब्द क्या है? हेड क्लर्क, दीवान Diwan. दीवान. ओके, I think I have to take the keyboard again. Something happened there. Okay, children, study. You study. Okay. Next one, William Shabd. Himsa. Himsa. William Shabd. screen. Yes, got it. Yes. Listen. Yay. Yes, And ma'am. the two Diwan guys is like that. finished. Ma'am, Diwan is finished. And what is sense? Shasan. Shasan means rule. Shasan means rule. Himsa. You only write till Asad. Till Asad. Okay. Next one, Rajkot. 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 And we wrote it. Ma'am, I wrote it. Royal court. Royal court. Royal court. Diwan head clerk. Diwan, head clerk. Then we can start the question answer. जन्म, opposite क्या है? जन्म, Janma. Mrityu. मृत्यु. Mrityu. आजादी, आजादी. Please. आजादी मतलब you know? Asad. आजादी means free. Free. गुलामी, Freedom. गुलामी means slavery. गुलामी, slavery. जन्म अर्थ क्या है? जन्म, Janma. Birth. birth. इसका opposite है मृत्यु. मृत्यु का अर्थ क्या है? Death. Death. आजादी, आजादी, गुलामी. Free. Asadi Gulabi. गुलामी. थोड़ा, थोड़ा अर्थ क्या है? थोड़ा, little. Doda. बहुत means Arrogance. No. थोड़ा, Asadi little, बहुत और many. थोड़ा, बहुत. Then everything write it only 3 times. Okay. Asadi Gulami. थोड़ा, बहुत. थोड़ा, 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 बहुत. थोड़ा, बहुत. ओके. गांधी जी को सारे लोग क्या कहकर पुकारते हैं? Bapu. जी को सारे लोग Bapu. बापू. Now you don't write question, just write only बापू. Okay. Question answer. बापू कहकर पुकारते थे. गांधी जी को सारे लोग. Whenever you are writing in the house, writing and studying at home, you have to write in full sentence. Okay. Because of time limit, I am writing like this. गांधी जी को सारे लोग बापू कहकर पुकारते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ? October. October. This date. Kहाँ means where? Allahabad. Porbandar, Gujarat, Porbandar. Yes. I said first, ma'am. गांधी जी Then का Noria जन्म did it. गुजरात Gujarat, Porbandar. Like that, like India, Kerala, Thrissur. Yes, like that. गुजरात के पोरबंदर में हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधी जी के माँ का नाम क्या है? माँ का नाम, Ma'am, माता जी का नाम क्या है?
पुतली बाई क्या है? पुतली बाई। का पिता का नाम पिता का नाम? बाई। करमचंद यस, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। ओके, और राइट इट। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। पिता का नाम करमचंद गांधी, करमचंद। Ma'am, it's late. It's not. यस, करमचंद गांधी और माता का नाम है पुतली बाई। पुतली बाई, पुतली बाई। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। How can forgot that? मोहनदास करमचंद गांधी। माता जी का नाम पुतली बाई, पिताजी का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। पिताजी का नाम करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम विथ इनिशियल करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। Ma'am, I think the father is called him Mohandas. No, Mohan, that Gandhi. Karmchand is Mohan. father's name, right? Then Karamchand Gandhi's father's name. Then Mohandas Karamchand Ma'am, Gandhi. like my name, Adinadam Salbin. Yes. Adinadam is my name. Yes, Adinadam Salbin. Okay. Like that, Mohandas Karamchand Gandhi. Okay. Children, study well, okay? I don't know, we will be, Saturday we will get period. Saturday you have to revise and come next 2 chapters, okay? Saturday, right? I will send the message, okay? Today evening I will send the link. Okay? Have to write and submit. पूरा हो गया? गांधी जी को सारे लोग क्या कहकर पुकारते थे? सारे लोग बापू। Babu, babu. बापू। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में। पिताजी का नाम क्या है? पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई। गांधी जी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। ओके। मुर्गे कहाँ रहते थे? मुर्गे शासन। गांव में रहते थे। गाँव में रहते हैं। गाँव में रहते हैं। ये दोनों क्यों झगड़ने लगे? कौन कितना ताकतवर है? हाँ, कौन ज्यादा कौन ताकतवर है, इस बात पर दोनों झगड़ने लगे। और Ma'am, I have Gandhi's life story, but I can't read it. वही Life of Gandhi. हाँ, I know the real story of Gandhi ji. Okay children, then all the best. Okay, धन्यवाद। Thank you ma'am. धन्यवाद बोलो। Thank you ma'am. धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद ma'am. धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद